Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the phylum Arthropoda. Let's start. Now the phylum Arthropoda. So first of all, their basic characteristics are there. They are triploblastic coelomates and possess the bilateral symmetry and now why they are called the arthropods. So the word is arthros, which means jointed, मतलब having joints, ये joints, wrist joint, elbow joint, shoulder joint like this, and pods means feet, so means they are the animals with jointed feet. Clear? इनके जो feet होते हैं, इनके जो limbs होते हैं, they are jointed, मतलब they have joints, having joints. आमतौर पर joints हुआ, it is the property of the vertebrates. ये तो invertebrates है. So invertebrates में ये इनके अंदर एक अलग से एक unique character आ गया. Jointed feet. Clear? Jointed feet और jointed appendages. इनको appendages भी कहा जाता है. Clear? Now, so appendages means the limbs. They are also called as the limbs. तो इनके जो limbs हैं, they have some joints. हालांकि ये invertebrates हैं. चलें, let's move on. They are thought or they are believed to have a common origin with annelids. इससे पीछे वाले जो segmented worms हैं. It is believed to have common origin with annelids. ये MCQ है, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? आर्थ्रोपोड्स के बारे में. ठीक है, आर्थ्रोपोड्स are believed to have the common origin with annelids due to some common structures. ये भी MCQ आ जाएगा. कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉमन इनके साथ शेयरिंग है? नंबर 1, द अपेंडेजेस. दोनों के अंदर अपेंडेजेस मौजूद हैं, मीन्स द ऑर्गन्स फॉर द लोकोमोशन. अपेंडेजेस, दे हैव गॉट क्यूटिकल. उनके पास भी क्यूटिकल है एज एंड दे हैव ऑल्सो गॉट द सेगमेंटेड बॉडी. And number 3 is the segmented body. इनकी body भी segmented है और तो annelids को तो हमने कहा ही segmented worms था, so they have also got segmented body. Another important thing is the arthropods have species more than any phyla of animals. Animals में जितने भी phyla हैं, सबसे ज़्यादा species यहाँ पर मौजूद हैं. आपको याद है चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फाइलेटिक लिनेज उसमें पढ़ा था आपका. इसकी एक क्लास पढ़ेंगे इंसेक्टा, उसमें सिर्फ द इंसेक्ट्स दे आर 53.1%. क्लियर? तो उस एतबार से आधे से ज़्यादा तो इसकी एक क्लास है. सो दैट इज़ वाई
सबसे ज़्यादा यानी कि जो वैरायटी भी इन्हीं के अंदर मौजूद है, हशरात जिनको कहा जाता है. Now let's move on. So they have got, they live everywhere, land, air, soil and water. एक्वेटिक भी हैं, पानी के अंदर, खुश्की के ऊपर, हवा के अंदर, ठीक है. Almost everywhere are they are present, and the damp decaying food as well. And their body is covered with cuticle that serves as exoskeleton and made up of chitin, made up of chitin. The cuticle, the exoskeleton, that is made up of chitin. So they have body segments. They also possess the body segments. There are three. They have distinct head, thorax, and the abdomen. Clear? अच्छा, क्यूटिकल के हवाले से भी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मार्क कर लें. The cuticle separates these segments and is secreted by epidermis. MCQ के लिए मार्क कर लें इसको. The cuticle is secreted by the epidermis. और यही इनके जो नेबरिंग यानी हेड और थोरक्स के दरमियान ये क्यूटिकल है, फिर थोरक्स और एब्डोमेन के दरमियान क्यूटिकल है, तो इस तरह से इनको सेपरेट करते हैं. Now coming towards their digestive system. So बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 12 में भी, चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी, ठीक है. So they have got various organs of digestion and each performing its own function. जिसमें foregut, midgut and hindgut. Clear? So foregut में the mouth and the esophagus, pharynx, esophagus and the crop and the gizzard. फिर midgut में उसके साथ attached है hepatic cache and the mesenteron और hindgut उसके अंदर. And the hindgut, it consists of the ileum and the colon and the rectum. And it is tube type digestive system. Tube type digestive system is there. और डिटेल से डिस्कस हो चुका. Now, their respiratory system. So they have got the tubes, the tracheal system, with tubes called tracheae, जो उनके smaller division, which opens to exterior via spiracles. जैसे याद आपको सिर्फ कॉकरोच के अंदर हमने बात की थी
It has got 10 pairs of spiracles which are open laterally. That open laterally. ये तो हो गई एक टेरेस्ट्रियल की. Aquatic arthropods have gills and book lungs for their respiratory organs. Okay, and if we talk about their cardiovascular system, so that is very unique. They have unique cardiovascular system, or it is also called CVS, which is open circulatory system. You know very well, and which directly bath the tissues and lacks hemoglobin. MCQ के लिए मार्क करेंगे. इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है and lacks hemoglobin, so that is why their blood is colorless blood, क्योंकि इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन नहीं है, क्योंकि इनके रेस्पिरेशन के लिए अलहदा से वो सिस्टम डायरेक्ट ट्यूबल जो ट्रिकल सिस्टम है जो कि इनके अंदर वो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट देयर excretory system, so they have got Malpighian tubules. They have got Malpighian tubules attached to the nutritive tract और गट. ठीक है, ये वाहिद ऐसे एनिमल्स हैं जिनका जो न्यूट्रिटिव सिस्टम है which have attached or the excretory system and excrete solid uric acid crystals. Clear? So that is their excretory system. And if you talk about their nervous system, so they have well developed nervous system. They have a simple brain. याद रखिएगा MCQs के लिए. Simple brain in the form of paired ganglia. Plus they have got double ventral nerve cord. आपने डिसेक्शन में भी देखी होगी कॉकरोच की नर्व कॉर्ड्स. ठीक है, डबल वेंट्रल नीचे वाले सरफेस पे वो नर्व कॉर्ड है. और इसके अलावा they have got ganglia in each segment from where nerves arise. वहाँ से फिर nerves जो हैं वो arise करती हैं. Clear? So that is how. और इनमें cardiovascular system एक और चीज़ भी आपने mention करनी है. They have got primitive heart. Their heart is primitive. Primitive tubular heart. Clear? Plays in the mid
present in the mid dorsal region. डिस्कस किया था डिटेल से, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, सो उसके ऊपर एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा मज़ीद डिटेल्स के लिए. एंड नाउ if we talk about their reproductive system, so the reproductive system, they have got separate sexes, the females with ovaries that produce the egg cells, and the males, they have the testes that produce the sperms. Okay, and they usually reproduce by sexual reproduction. कुछ के अंदर asexual भी होती है, जैसे आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 18 में, आगे डिस्कस भी होगा. There is the parthenogenesis, like in the honeybees, the ants, they have got, there is parthenogenesis, haploid and diploid parthenogenesis. Okay? So asexual, but the most common method is the sexual reproduction. And they have sensory organs in the form of antenna and compound eyes. These are the sensory organs among them, and anything. So there's exoskeleton and the segments and digestive, respiratory, cardiovascular, excretory, nervous system, reproductive system, sensory organs. So all of the basic components of the this have. One thing more, their body cavity, which is very important. The body cavity, जिसको हम कहते हैं सीलोम, is reduced. ये reduced है, याद रखिएगा. Instead, there is hemocoel, ठीक है, that communicates with circulatory system. Clear? ये communicate करती है circulatory system के साथ. मतलब कि ये जो है तो सीलोम लेकिन reduced है, और उसकी जगह पे the hemocoel is present. Clear? जो कि ये cavity है और इसके अंदर वो फिर जो है वो hemolymph usually there is present, उसमें flow कर रहा होता है the fluid.